मैम जी, स्टार्ट अस्सलाम कर। वालेकुम क्लास। अच्छा, last time we discussed about topical delivery methods of fluoride. Today, our topic of discussion is basically mechanism of action of fluoride and defluoridation technique. Okay. Nabil, next slide करें. So first comes to the mechanism of action of fluoride. It is basically having various actions. Fluoride is basically having various actions on tooth. First include it increases the enamel's resistant to basically acid solubility. Okay, when we incorporate fluoride into the developing tooth structure, it basically act on enamel. Okay, and enamel is having hydroxyapatite crystals, as you all know. So when fluoride is incorporated into the developing tooth, the fluoroapatite crystals will be replaced by hydroxyapatite crystals, and then they form fluoroapatite crystals. And these fluoroapatite crystals will be more resistant to caries and acid attack. So that's the way it will increase the enamel's resistance to acid solubility by the formation of fluoroapatite crystals. Okay. Next, it will enhance. It will basically facilitate remineralization. So when fluoride is introduced into the oral cavity onto the tooth surface, and as I told you, when we can give fluoride systemically, it will also secrete into the saliva. And when this fluoride that is present in the saliva, and that will incorporate on into the tooth surface, it will facilitate and it will enhance remineralization. And fluoride will also be present in the plaque, and the fluoride that is present in the plaque, that it will also enhance remineralization process. Okay, so use of topical fluoride raises the fluoride level of the tooth surface and underlying tissue to a level expected to protect against dental caries. Okay, as we all know, fluoride is present in two forms, a bound form and ionic form. As I told you in our previous lecture, कि जो कैल्शियम फ्लोराइड मैंने बताया था, कैल्शियम फ्लोराइड बनता है, दैट कैल्शियम फ्लोराइड जो मैंने आपको बताया था वो choking cough phenomena, that calcium fluoride will be present as a fluoride reservoir on the tooth surface. ठीक है, और वो तब तक ब्लीचेज आउट होता रहेगा जब जब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसिड प्रोड्यूस एंजाइम बनाएंगे और एंजाइम्स एसिड प्रोड्यूस करेंगे और एसिड अटैक होगा टूथ सरफेस पे, तो ये जो बाउंड फ्लोराइड होगा जो कि रेजरवायर होगा टूथ सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, ये रिलीज होता रहेगा. ठीक है, और ये फिर जो है टूथ को एसिड अटैक से बचाएगा. ठीक है. नेक्स्ट is basically antibacterial effect of fluoride. Antibacterial effect of fluoride is when fluoride is introduced into the oral cavity, into the tooth surface, it will basically inhibit the enzymal activity that is essential to cell membrane and growth of bacteria, the bacteria that are present in the plaque. Okay, it will also lower the surface energy of tooth. Okay, and it will also strip off bacteria
from hydroxyapatite crystals. Okay, so fluoride can bind more effectively to positively charged areas on apatite crystals than the bacteria. Another action is it will modify the size and shape of the teeth. That is basically it will reduce the cusp height, fissure depth, and increase in fissure width, so making the tooth less susceptible to caries. Okay, as we know, deep fissures are the more favorite side of plaque accumulation and plaques, food stagnation, and if the fissures will be deep, then there are more chances of food stagnation there. Then there are more chances of caries formation. So it will also decrease the fissure depth and increase the fissure depth width, so making the teeth less susceptible to caries. So these are basically the mechanism of action of different mechanism of action of fluoride. Now comes to the defluoridation techniques. Defluoridation meaning is basically a removal of excessive fluoride from the water uh, to bring it to the optimum level. So basically, fluoride is described as a double-edged sword. ठीक है, double-edged sword का मतलब है कि इसकी adequate injection is associated with the prevention of caries. We all know, and excessive intake leads to the dental skeleton and soft tissue fluorosis. ठीक है, that has no. So बेसिकली फ्लोराइड जो है इसका डबल एक्शन है. नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ये इसका एक्सेसिव यूज जो है वो फ्लोरोसिस कर देगा हार्ट टिश्यू का और डेंटल हार्ट टिश्यू का. ठीक है, स्केलेटल. और अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो उसमें हम इसकी जो एडिक्वेट ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंजेक्शन है दैट विल बी एसोसिएटेड विद द control and prevention of dental caries. So we have to be very careful while we are introducing fluoride in any dietary source, in any drinking source, or any other source. If we are taking it topically, we are taking it systemically, we are taking it like in any salt, in any drinking source, we have to be very careful about the optimum level of fluoride. Next. Basically, in 1984, WHO guidelines suggested that in areas, I have told you all this previously, I'm just going through, okay, in the warmer climate where water intake is more, we can set the optimum level of fluoride to the lowest range that will be 0.7 part per million. Okay, or comparative to the colder climate where intake of water is less, we can set the optimum level to the upper limits that will be 1.2 part per million. Okay, so optimal fluoride concentration in the drinking water may be defined as the one that can arrest the prevalence of dental caries without causing any adverse effects leading to dental fluorosis. Next, these all things I have told you in very detail, so I'm just going through these things, coming to the point. So, concentration of fluoride in water is directly proportional to degree of fluorosis. Okay, enamel mottling is widespread in areas. This is all written about the Dean's fluorosis index. Okay, so enamel mottling is widespread in areas with the water having fluoride content of 3 part per million, and if level exceeds to 4 part per million, discrete pitting of enamel will be seen.
and mottling is less in case of fluoride levels 2.5 to 3 part per million with a dull chalky white appearance of teeth, and no mottling or any enamel change observed in the area with the water containing optimum level of 1 part per million. So I'm just going this slide as we have already we have read it in very detail in our previous lectures. So now comes to the main point, that is the we have to discuss the method of defluoridation. Providing water with the optimum fluoride concentration is the only way by which the generation yet to be born can be totally protective against dental caries. It can be achieved by the following methods. Removal of fluoride. As I told you, defluoridation is basically the level of fluoride in the water access to optimum level. Okay, if the excessive amount of fluoride will be present in the water, then there is a need to defluoridate the water of that area. So it can be achieved by the following methods: removal of fluoride from the water using suitable techniques, as we will discuss later, absorption technique, ion exchange technique, नलगोंडा टेक्निक या फिर ब्लेंडिंग टेक्निक या फिर इसके अलावा लोकेटिंग alternative source of safe water. We can bring the water from the area where fluoride level is maintained, fluoride level of that water is maintained, या फिर ब्रिंगिंग इन वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सेफ सोर्स, वहीं कि आप दूर से कहीं पानी जो है वो ले आए बजाय अपने एरिया का पानी इस्तेमाल करने के जिसमें कि फ्लोराइड लेवल बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट, समझ आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है. So defluoridation is basically a conventional and widely tested method for supplying safe water to the fluorosis affected communities. Okay. Defluoridation is basically defined as downward adjustment of the level of fluoride in drinking water to optimum level. जैसा कि मैंने आपको बताया कि excessive level को हम remove करके water को fluoride content in water brings to optimum level. Defluoridation techniques can be broadly classified into 4 categories: absorption technique, ion exchange technique, precipitation technique, या फिर other techniques which include electrochemical defluoridation or reverse osmosis. The techniques that are mentioned in your book are absorption technique, ion exchange technique, and Nalgonda technique. Okay. Nalgonda technique is very important defluoridation topic, sometimes asked in the your SEQ question, और सबसे ज़्यादा इसमें से Nalgonda technique आती है, ठीक है? So Nalgonda technique is not written in very detail in your books. So I'm telling you all the steps that are involving in Nalgonda technique. So please listen it carefully. It will not be written in your book. Okay. Next. First is additive method. In additive method, chemicals are added to precipitate the fluoride, and the fluoride is passed through mixing basins, setting beds, and filtering beds. Okay. First of all, we will mix the chemicals uh, to the water that is having excessive fluoride. These these chemicals will precipitate out the fluoride, and then this fluoride is passed through mixing basins, setting beds, and filtering beds. Okay, to remove it from the water. So basically, which chemical we can use? We can use lime, magnesium compounds, and aluminum sulfate. Next, next is adsorption method. Okay, in adsorption method, the water rate is basically ion exchange method. Okay, we will remove the excess fluoride from the water by ion exchange.
The water rich in fluoride is done over contact beds. Contact beds, these are basically ion exchange based filters, okay, where the fluoride is removed by the ion exchange, okay. For this purpose, we can use synthetic hydroxyapatite. This synthetic hydroxyapatite is basically very high in cost. So uh, nowadays it cannot be used because of it is very expensive. इसके अलावा हम इसमें ion exchange resin जो है वो यूज कर सकते हैं that are again expensive. इसके अलावा activated alumina जो है वो हम these are basically the materials that we can use for the absorption method. Next, this technique is basically very important for examination. आपके जो prof examination है उसमें basically ज़्यादातर जो है यही वाली टेक्निक पूछी जाती है, नलगोंडा टेक्निक. Nalgonda technique is basically presented by a National Environmental Engineering Research Institute that is present in India. उन्होंने जो है ये नलगोंडा टेक्निक जो है वो दी थी, ठीक है. That is very economical and simple method for removal of fluoride, okay, known as Nalgonda technique. The process basically comprises the addition of sodium aluminate, lime, and bleaching powder to the fluoride water, followed by flocculation, sedimentation, and filtration methods. ठीक है, इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि फ्लोरिडेटेड वाटर में सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं. दैट विल पास थ्रू flocculation, sedimentation, and filtration process. Okay, this technique is extremely useful for both domestic as well as community water supply to remove the excessive amount of fluoride from the water. Next, this is basically the picture that we will discuss in the end. First, we have to go through all that steps. Next. So the mechanism basically involves the whole unit holds basically 22 liters of water, which is filled into the upper chamber. Okay, Dr. Nabil, please show the picture. Okay, in the upper chamber, uh, we will put 22 liters of water. Back to the slide. Sorry, ये थोड़ा सा स्टक हो गया है PowerPoint 8 मिनट. Back to this slide, ma'am. Right? ये वाली, हाँ. सो हम अपर चैम्बर में 22 लीटर ऑफ वाटर जो है उसे फिल कर देंगे उससे, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली रैपिड मिक्सिंग करेंगे हम, ठीक है. रैपिड मिक्सिंग इज एन फर्स्ट चैम्बर जहां पर हमने 22 लीटर वाटर इंट्रोड्यूस करवाया है, साथ ही हम जो हमारे इसमें हमने केमिकल्स यूज करने हैं जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम और ब्लीचिंग पाउडर आता है, ठीक है, वो भी उसमें डाल देंगे और फिर रैपिड मिक्सिंग करेंगे. रैपिड मिक्सिंग इज एन ऑपरेशन बाय विच द कोएगुलेंट इज बेसिकली द थिंग दैट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड दैट केमिकल्स, ठीक है. जो केमिकल्स हमने पानी में डाले हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो और वाटर का मिक्सचर
the whole thing is called coagulant. Okay? So rapid mixing is an operation by which the coagulant is rapidly and uniformly dispersed throughout a single or multiple phase system. Okay, it is rapidly mixed for a period of 30 to 60 seconds. The whole coagulant will be rapidly mixed for a period of 30 to 60 seconds with a speed of 10 to 20 rpm. Okay, so that the coagulant is rapidly and uniformly dispersed. Okay, this helps in the formation of microflocs and results in the proper utilization of chemical coagulant. So हमने क्या किया, 22 liter of water along with the chemicals used for defluoridation put in the upper chamber. Then we mix the whole coagulant with the speed of 10 to 20 rpm for the 30 to 60 seconds, and with the uh, uh, mixing of this whole coagulant, we have the formation of microflocs. Okay, next slide. Microflocs are the end product of this mixing. Next, now next stage is flocculation. First was the rapid mixing, next is flocculation. It is the second stage of the formation of suitable particles, flocs, from the destabilized colloidal size particles. In the rapid mixing, we have the formation of um, uh, uh, microflocs, okay, particles that were destabilized and that were colloidal size particles. Now, in the flocculation stage, we will have the formation of suitable size floc particles. Okay, it is achieved by gentle and further prolonged mixing for a period of 10 to 15 minutes with the speed of 2 to 4 rpm. रैपिड मिक्सिंग में हमने जो है कोएगुलेंट को मिक्स किया फॉर 30 टू 40 सेकेंड्स विद द स्पीड ऑफ डॉक्टर नबीज क्या स्पीड थी उसमें कम, हाँ 10 to 20 rpm, and we have the formation of uh, microflocs particles that were destabilized. Okay, now in the flocculation stage, we have the formation of suitable sized microflocs particles by the prolonged gentle mixing for further 10 to 15-minute period with the speed of 2 to 4 rpm. This is the whole about flocculation stage. Next is sedimentation. Sedimentation is basically separation from the water by the gravitational setting of suspended particles that are heavier than water. Now, the particles that are heavier than water, that are containing the excessive amount of fluoride, will become on the surface, and that will be heavier than water, and then we will separate these suspended particles from the water, okay, by the gravitational setting. Okay, you don't need to read these factors affect the sedimentation. Okay, you just uh, memorize the sedimentation. Okay, we will separate the heavier particles that will come on the surface by the gravitational force. Okay, next, this is the last step, filtration. It is the process of separating suspending and colloidal impurities from water by pass through a porous media. Okay, now we will separate these suspended or colloidal impurities from water by passing through porous media. Okay, by passing through filters. The flocculated water is allowed to settle and filter through fuller's earth candle overnight. ठीक है, then treated water जो हमने separate कर लिया, ठीक है, will be available for drinking and cooking with desired level of fluoride. So this was whole about the Nalgonda technique. It is containing 4 steps. First step is rapid mix. First of all, the chemical that we are using in it is sodium aluminate, lime, and bleaching powder. The first step that is involved is a rapid mixing. Second step that is involved is flocculation.
Third step is sedimentation, and fourth is filtration. In rapid mixing, we will mix sodium aluminate and bleaching powder or lime in 22 liter of water in the upper chamber. Then we rapidly mix it with the speed of 30 to 40 seconds. ठीक है, the 20 to 10 to 20 rpm speed. ठीक है, and the end product will be microflocs. Okay, that will be destabilized and colloidal in size. ठीक है, colloidal particle. Then in फ्लोकुलेशन स्टेज में क्या होगा, these stabilized particles जो हैं will gain the proper shape. ठीक है, proper microflocs की फॉर्म में ये आ जाएंगे. ठीक है, by the further prolonged mixing for 15 to 20 minutes. Okay, at the speed of 2 to 4 rpm. नेक्स्ट इज द सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन स्टेज में क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी, heavier particles will become on the surface. ठीक है, और उनकी separation हो जाएगी by the gravitational force. And last is the filtration stage. filtration stage में हम separate कर देंगे suspended colloidal heavier particles को through the porous media. Okay, and then the treated water will be available for drinking and cooking with desired level of fluoride. um, this was our all about our today's topic. आज का लेक्चर छोटा था, इसके साथ ही हमारा ये जो फ्लोराइड इन डेंटिस्ट्री चैप्टर है ये भी खत्म हो गया. ठीक है, अगेन टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से कोई एक टॉपिक भी छोड़ने वाला नहीं. हर टॉपिक इसमें से जो है एग्जाम में आप लोग अगर अपने एससीक्यूज यूक्यूज खोल के देखें तो रिपीट हुआ है. ठीक है, इसमें से 2 एससीक्यूज भी आ जाते हैं समटाइम्स, वरना एक एससीक्यू तो पक्का है. ठीक है, लास्ट 2-3 साल से इसमें से 2 एससीक्यूज आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, डॉक्टर नबील पूछे उसका आंसर. हेलो जी मैडम, मैं सुन रहा हूँ. सॉरी मुझे. जी. अच्छा पहले तो ये कोई रोल नंबर मेंशन करें ना, इनसे मैं ये टेक्निक्स पूछूं. तलहा खान, प्लीज अनम्यूट योर हाँ माइक. जी, तलहा बताएं व्हाट इज डिफ्लोरिडेशन. तलहा खान, प्लीज. तलहा. तलहा मुझे लगता है सो गया. तलहा एब्सेंट हो गया आज. सोया है तलहा? नहीं आ रहा. तलहा. ये जो सो रहा है ना इसकी एब्सेंट लगा दो प्लीज. ठीक है, या जो रोल नंबर नहीं पिक कर रहा उसकी एब्सेंट मार्क करते जाएं. तुम लोगों की अब मैं वीडियोस ऑन करवा के रखा करूं हैं. राबिया आयरम, रोल नंबर 35. अनम्यूट योर माइक. अस्सलामुअलैकुम. जी, सबसे कहो कि अनम्यूट करें माइक को. अब व्हाट इज डिफ्लोरिडेशन? It is a removal of fluoride using different technique. जी, Removal of fluoride. रिमूवल ऑफ ओनली फ्लोराइड. Defluoridation from water. It is डिफ्लोरिडेशन removal क्यों of करते हैं fluoride हम? from. डिफ्लोरिडेशन हम क्यों करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लोरिडेशन? ताकि एक नॉर्मल फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हो, ज्यादा एक्सेसिव ना हो. किस किस्म के पानी में हम डिफ्लोरिडेशन करते हैं? I don't get it. किस किस्म के पानी में?
जी, फ्लोराइड डेफिशिएंट पानी में या फ्लोराइड एक्सेसिव वाटर में हम एक्सेसिव करते हैं डी? एक्सेसिव तो ये में। मुंह से बोले ना आप, ये बताएं मैम आप। मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला है to remove excessive fluoride You from didn't water. use the word excessive, okay? Don't be smart. Oh, okay, I'm sorry. You didn't use the word excessive. You were just saying removal of fluoride from water. What type of water? Tell me. जिसमें ज़्यादा concentration of fluoride की। फ्लोराइड की कंसंट्रेशन नहीं होती, फ्लोराइड का लेवल होता है, ठीक है? What is the optimum level of fluoride in drinking water? 19 मोहम्मद आदिल 20 यही बताएगी डॉक्टर नबील, यही पिछले वाली बताएगी। राबिया इरम आप बताएंगे। What is the optimum level of fluoride? राबिया इरम प्लीज आंसर। डॉक्टर नबील, जी जी मैम बोल दिए। ये जो बता रही थी इसी को दोबारा कहें आए और ये बताए व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर राबिया फॉर वार्मर क्लाइमेट, फॉर कोल्डर क्लाइमेट और फॉर मॉडरेट क्लाइमेट। राबिया इरम मैं 3600 दफा बता चुकी हूँ ये बात। राबिया आप बताओ। Sir, 1 parts per million is the normal. फॉर मॉडरेट क्लाइमेट कितना है ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड? जहां पर ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी, वहां पर फ्लोराइड का लेवल कितना एडजस्ट करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, कितने पार्ट पर मिलियन? Excuse me, I'm asking to you. Um, Dr. Nabil, mark her absent. नेक्स्ट रोल नंबर बोले। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये वो बात मैं पूछ रही हूँ जो कि बात मैं 10 दफा बता चुकी हूँ अपने लेक्चर में। रोल नंबर 19। जी, रोल नंबर 19 कौन है? कौन शहजादा या शहजादी है? बोले। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम? मैम आदिल। जी आदिल, what is the optimum level of fluoride for a warmer climate, for colder climate and for a moderate climate? I have told you many times. मैम फॉर कोल्ड क्लाइमेट इट्स 1.2 parts per million। For कोल्ड क्लाइमेट yes, for cold climate it's 1.2. Why? The reason? मैम why हॉट में why we keep it to the upper limit? What's the reason behind that? You are मैम ये telling true. कोल्डर क्लाइमेट में क्या होगा? इनटेक ऑफ वाटर क्या होगा? मैम इनटेक ऑफ वाटर कम हो जाएगा कोल्ड क्लाइमेट। तो इसीलिए हम फ्लोराइड का लेवल जो है अपर लिमिट पे रखेंगे, ठीक है? जी मैम। एंड व्हाट अबाउट वार्मर क्लाइमेट? मैम वार्मर क्लाइमेट में 0.7 parts per million। हाँ, टुवर्ड्स लोअर लिमिट। व्हाई? मैम इसमें वाटर इनटेक ज्यादा होगा। वाटर इनटेक ज्यादा होगा, इसलिए हम फ्लोराइड का लेवल पानी में कम रखेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा पानी पियेंगे, ज्यादा फ्लोराइड अंदर जाए। और यस फॉर मॉडरेट क्लाइमेट, में मॉडरेट मैम क्लाइमेट के लिए 1 part per million होगा मॉडरेट में। 1 पार्ट पर मिलियन। जहाँ जहाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, वहां के लिए ऑप्टिमम लेवल जो है हम 1 पार्ट पर मिलियन रखेंगे। व्हाट इज डिफ्लोरिडेशन? मैम डिफ्लोरिडेशन मैम ये थोड़ा नहीं यार। बेटा अपने लफ्जों में बता दो, अभी तो मैंने बताया आपको, नाम ही बता रहा है डिफ्लोरिडेशन क्या है। इसमें अभी कौन सी ऐसी लेक्चर रॉकेट साइंस है? मुझे तो लगता है तुम लोग सब म्यूट करके माइक सो रहे थे।
क्या फायदा हुआ जूम पे इंटरेक्टिव सेशन का जब तुम लोगों ने सोना ही है यहाँ पे भी। और मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों का प्रॉफ अक्टूबर में ही होना है, और ये ना समझना कि तुम लोगों का प्रॉफ भी जो है वो ऑनलाइन ही होना है। प्रॉफ मैम तुम लोगों का प्रॉपर तरीके से होना है, ठीक है। और फिर एग्जाम भी मैंने ही लेना है, वाइवा भी मैंने ही लेना है तुम लोगों का, ये याद रखना बात। मैम ये defluoridation, removal of excess fluoride from water. हाँ, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर to bring the fluoride level to the optimum level. Okay, that Yes. is 1 part per million. और क्या क्या होंगी डिफ्लोरिडेशन टेक्निक? अच्छा, डिफ्लोरिडेशन टेक्निक में बच्चों एक मैं आप लोगों को ब्लेंडिंग मेथड बताना भूल गई हूँ, जो कि वैसे यूज नहीं होता। अब हम ज्यादातर केमिकल मेथड्स ही यूज करते हैं। ब्लेंडिंग मेथड इज basically we will blend the water from the well having excess amount of fluoride with another water supply that will be deficient in fluoride. So we'll basically blend करेंगे the water that is having higher fluoride level with the water that is having deficient fluoride, ठीक है। So this is basically called blending हमारी method, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, इट्स लेस देन 1 मिनट नाउ। हाँ, इसकी एडवांटेज बेसिकली ये है कि ये वेरी चीप है, इसमें सिर्फ कनेक्टिंग पाइप्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि हम इसको सिर्फ उन एरियाज में यूज कर सकते हैं जहाँ पर फ्लोराइड जो है वो एक्सट्रीम इन कंसंट्रेशन जो है पानी में प्रेजेंट हो, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज नहीं करते। हम केमिकल्स यूज करते हैं डिफ्लोरिडेशन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल डिजीजेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।